So hello everyone. So in this video we will discuss the steady state behavior of inductor, that why it is short circuited at the steady state when it is connected with the DC supply. So first of all, I'm letting here a basic RL network, series RL network. So we have provided the series RL network a DC input. Okay. So this is the DC input we have provided, and the current flowing across this network is the inductor current only, right? IL of T, and the voltage across this inductor is VL of T. So this is the DC input. Then in the first case, when the inductor is in the charging mode, okay, because we have provided the DC input, so inductor is charging. So when the inductor is charging, तो इसके पास जो करंट है VL ऑफ T वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? बिकॉज इंडक्टर चार्ज कर रहा है तो इसका जो करंट है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो भी इसका इनिशियल करंट होगा उससे ये इंक्रीज करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, राइट? अब लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी हम कंसिडर कि IL0 माइनस जो है वो 0 एम्पीयर था, मतलब इनिशियली इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज रहा है, ठीक है। अब इंडक्टर का जो ट्रांजिएंट इक्वेशन है IL ऑफ T इज इक्वल्स टू IL of infinite plus IL of 0 plus minus of IL infinite and exponential raised to power minus of T upon tau. This is our transient equation which is valid for the time instant greater than equal to 0. ठीक है। So we know that कि transient inductor का property है, it is it holds the current, so IL0 minus is equals to IL0 plus, and because we have let here that inductor is initially discharged, so ये 0 एम्पीयर हो जाएगा। So inductor का जो current equation है वो simply IL of infinite and 1 minus e raised to power minus of T upon tau, right? तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन, तो इसके अकॉर्डिंग इंडक्टर चार्ज कर रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चार्ज कर रहा होगा, राइट? और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। So this is our standard charging equation. So when the inductor current is an increasing function, inductor के पास जो voltage होता है that is the VL of T, जो उसका relation है between the inductor voltage and inductor current is L di by T, right? So this is the L di by dt. So derivative of this ILT is an increasing function. तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी रिजल्ट करेगा, राइट? तो इट मींस व्हेन द इंडक्टर इज इन द चार्जिंग मोड, इट करंट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट्स वोल्टेज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज़ कोई भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेट्स से यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फंक्शन है जो ऐसा इंक्रीज कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करके, तो जैसे यहाँ पर इट इज इंक्रीजिंग, राइट? यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, देन इट इज डिक्रीजिंग हियर। सो जब एक पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा है तो इस रीजन में इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप इसका, राइट? स्लोप जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो दैट्स व्हाई द VLT जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर व्हेन द इंडक्टर इज इन चार्जिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इंडक्टर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा है, सो इस इक्वेशन को ग्राफिकली वी कैन ड्रॉ यहाँ पर। This is the IL of T, which is IL infinite and 1 minus e raised to power minus of T upon, right? तो इस तरह से दिस इज द इनिशियल करंट 0 एम्पीयर, और उसके बाद ये इस तरह से चार्ज होकर उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा। दिस इज द IL of infinite which is the maximum value of the inductor current, ठीक है? And this is increasing. Now when at this time instant at t tending to infinite, when this inductor current has reached to its maximum value, that is IL infinite, right? So this t tending to infinite is the present steady state. ये present का steady state होता है बेसिकली। तो इस टाइम इंस्टेंट पे इंडक्टर का जो करंट है ये बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है, राइट? जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर at this time instant, which is VL infinite, which is equals to L d by dt of IL infinite, right? And IL infinite is having the maximum value. ये एक मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेट हो चुका है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू का
डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, राइट? सो दिस इज 0 वोल्ट. तो VL इनफाइनाइट वी हैव गॉट एज 0 वोल्ट, और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज जीरो है, दैट मीन्स it is short circuited, right? So that's why the inductor is short circuited with the steady state. This is the reason why the inductor is short circuited, because at the steady state, if the inductor is in charging, it will attain its maximum value at the steady state, and the voltage across the inductor is L diability, the relation between the voltage and the current of the inductor is L diability, and at the steady state, that is VL infinite, is equals to L d by dt of IL infinite, and IL infinite is having the maximum value, which is a constant value. Or constant value or derivative is always zero. That's why the inductor is short circuited at the steady state. So ये basically reason है. Right? तो I hope it is clear. अब जैसे यहाँ पर we have talked about the present scenario. So similarly, t is equals to 0 minus is the past steady state. ये जो 0 minus का टाइम इंस्टेंट है, ये बेसिकली पास्ट का स्टेडी स्टेट डिनोट करते हैं. सो VL 0 minus, which will be equals to L d by dt of IL 0 minus, right? तो अभी के लिए तो वी हैव कंसिडर्ड कि यहाँ पर 0 एम्पियर कंसिडर किया, वी हैव इनिशियल कंसिडर द इनिशियल करंट ऑफ द इंडक्टर एज 0, ठीक है? सो L d by dt ऑफ 0, दिस विल बी 0, राइट? ये 0 वोल्ट हो जाएगा. और इनिशियली अगर कुछ वोल्टेज अवेलेबल भी होता है, इनिशियली करंट अगर कुछ अवेलेबल होता है, तो वो एक कांस्टेंट करंट ही होता है, राइट? जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी अवेलेबल होता है, तो कांस्टेंट करंट होता है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 वोल्ट का है, तो VL 0 माइनस भी हमेशा 0 वोल्ट होगा, बिकॉज ये पास का स्टेडी स्टेट है, एंड स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट, राइट? बट अब यहाँ पर VL 0 माइनस तो 0 वोल्ट है, बट we know that कि VL 0 minus will never be equals to VL 0 plus, because इंडक्टर वोल्टेज को कभी होल्ड नहीं करता है, राइट? तो यही बेसिकली रीजन है. दिस इज द रीजन व्हाई द इंडक्टर का जो वोल्टेज का कर्व है VL ऑफ t, ये हमेशा एक डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म होती है. दिस इज ऑलवेज अ डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म. व्हाई डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म? बिकॉज VL 0 minus is fixed at 0 volt and it is never equals to VL 0 plus. So this is the reason why the inductor voltage is a discontinuous wave, and the inductor current, this current is always a continuous waveform. This is always a continuous waveform, and this is always a discontinuous waveform. Now let's write the transient equation of the inductor voltage. So VL of t will be VL infinite plus of VL 0 plus minus VL infinite and exponential raised to power minus of k tau, which is valid for the time instant greater than equal to 0. Okay, so VL infinite is 0, right? So this VL of t will be simply VL 0 plus and e raised to power minus of t upon tau. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज का फॉर्म बनेगा, राइट? अब 0 प्लस we have to find out VL 0 plus. So for finding this VL 0 plus, we have to the circuit at t is equals to 0 plus. तो यहाँ पर सर्किट को we have to draw the circuit at t equal to 0 plus पर. जब सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इनिशियल करंट सोर्स. जो उसका इनिशियल करंट है उसके सोर्स से बेसिकली इंडक्टर रिप्लेस होता है. तो इनिशियली वी हैव कंसिडर्ड कि 0 एम्पियर है इनिशियल करंट, तो 0 एम्पियर के करंट सोर्स से इंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे. ये जो सर्किट वी हैव कंसिडर्ड, इस सर्किट में सिंपली, राइट? तो यहाँ पर सर्किट जो है सिंपली इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पर दिस इज द इनपुट, दिस इज द रेजिस्टर, रिंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय 0 एम्पियर करंट सोर्स एंड दिस इज द इनपुट. एंड इसके अप्रोच जो वोल्टेज है दिस इज नथिंग बट जो VL 0 प्लस, राइट? अब 0 एम्पियर करंट की वजह से इसका ड्रॉप जो है वो 0 वोल्ट हो जाएगा और VL 0 प्लस इज नथिंग बट इनपुट, राइट? सो VL ऑफ t इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर VL ऑफ t विल बी VL 0 plus which is equals to input, right? So VI e raised to power of t upon tau. So ये बेसिकली इंडक्टर का वोल्टेज का इक्वेशन हो जाएगा, जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइक दिस. I should make both the waveforms simultaneously. तो इंडक्टर करंट और वोल्टेज दोनों साथ में बना लेते हैं यहाँ पर. इंडक्टर का करंट हो जाएगा और यहाँ पर इंडक्टर का वोल्टेज. IL of t shall be
this. This is the IL infinite, and now VL of t, which is equals to VL0 plus e raised to power minus of t upon tau, and VL0 plus is input. तो यहाँ पर कुछ अप्लाई कर रहा होगा VL0 plus, राइट? यहाँ पर VL0 plus जो बेसिकली इनपुट हो, उसके बाद फिर बिकॉज VL इनफाइनाइट है तो ये इस तरह से डिस्चार्ज करेगा. तो यहाँ पर दिस इज फिक्स्ड वैल्यू कि VL इनफाइनाइट 0 वोल्ट होगा ऑलवेज. अब यहाँ पर वी नो दैट कि VL0 माइनस दिस इज द 0 वोल्ट, अभी अपन ने देखा, एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी जो बेसिकली इनके नॉट इक्वल होने की वजह से है कि VL0 माइनस इज नॉट इक्वल टू VL0 प्लस. तो ये बेसिकली डिसकंटिन्यूस वेवफॉर्म होता है इस तरह से इंडक्टर का वोल्टेज. यहाँ पर एक was 0 और यहाँ पर close was having the value VL0 plus, and this is the positive form. As we can see, it is lying in the first quadrant. This is the IL infinite 1 minus h to the power minus of e upon tau. This is the charging equation, and this is a continuous waveform always. And inductor voltage waveform is always a discontinuous waveform. So this is the story of the charging of the inductor, right? I hope it is clear. Let's discuss the discharge. So discharging में basically second case, what is the discharge? So when the inductor is discharging, मतलब source free network है, we have not provided the source to the network. So source free network है मतलब simple सा network है कि ये resistor is the inductor और यहाँ पर we have not provided the input, ठीक. So अब जो इंडक्टर का करंट था, मतलब लेट्स से यहाँ पर इनिशियल करंट हम अज्यूमिंग एज आई नॉट आउटपुट, कुछ इसका इनिशियल करंट था और उसी से बेसिकली ये डिस्चार्ज करेगा, राइट? क्योंकि यही इनिशियल करंट है और इसी से डिस्चार्ज करेगा इस रेजिस्टर के ऊपर, राइट? तो VL ऑफ t जो है इंडक्टर करंट वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो VL ऑफ t इंडक्टर का जो वोल्टेज है VL ऑफ t इज इक्वल टू d by dt ऑफ दैट डिक्रीजिंग फंक्शन. एक डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसे the slope is always a negative quantity, so negative function. ये जो है एक नेगेटिव फंक्शन है इस बार इस इंडक्टर का वोल्टेज, राइट? तो यहाँ पर इंडक्टर का जो करंट इक्वेशन है IL ऑफ t which will be equals to IL infinite plus ट्रांजिएंट इक्वेशन के अकॉर्डिंग IL infinite plus IL0 plus minus of IL infinite and exponential raised to power minus of k upon 2. अब यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा IL infinite, right? Because ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, so final value will be 0. So जो initial value है इसका that is IL0 plus, right? This is nothing but equals to IL0 plus, इसी से डिस्चार्ज करेगा and e raised to power minus of k upon 2 standard discharging. So I naught e raised to power minus of k upon tau के अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज कर रहा है. So this is the current equation for the discharging of inductor, which we can यहाँ पर draw. This is having the initial value है और उसके बाद ये इस तरह से डिस्चार्जिंग में है, ठीक है. So अब यहाँ पर at t tending to infinity जब ये फाइनली इसके मतलब अभी जैसे यहाँ पर लेट्स से कि ये इसके मिनिमम वैल्यू को एक्वायर कर चुका है. मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है बट से यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू है उसको इसने एक्वायर कर लिया है t tending to infinite, right? At t tending to infinite is that it has reached to its minimum value, right? So t tending to infinite, which is the present steady state, the inductor current IL of infinite has reached to its minimum value, which is a constant value. So VL of infinite, which will be equals to L d by dt of that minimum value, which is a constant value. So derivative of constant value is 0. That where the inductor is short circuited at the steady state. Whether the inductor is charging or the inductor is discharging, always it is short circuited at the steady state. Okay. So ये तो हो गया present का steady state. Again we have to talk about the past steady state. T0 minus this is the past steady state. So past steady state पे VL 0 minus
Now it will be equals to L d by dt of IL0 minus, and IL0 minus we have considered as I naught ampere. So d by dt of I naught. So ये भी basically constant current ही होगा I naught, तो इसमें इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होना है, right? Because steady state में is always short circuited. तो यहाँ पर when we draw the circuit, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन इक्वेशन होगा VLT का, which will be simply VL0 plus t raised to power minus of t by tau, right? Because VL infinite is always zero. So we have to draw the circuit at t equal to 0 plus. तो अब t equal to 0 plus पे जब सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो IL0 माइनस I नॉट एम्पेयर है, तो इसके करंट सोर्स से इंडक्टर विल बी रिप्लेस, राइट? तो सर्किट विल बी, यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया एंड द इंडक्टर इज रिप्लेस बाय दिस I नॉट एम्पेयर करंट, right? इसका क्रॉस जो वोल्टेज है, दिस इज नथिंग बट द VL0, और दिस इज short circuit because we have not provided the supply. This is 0 volt. So what will be the VL0 plus? इसके क्रॉस जैसे इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप हुआ, this is the VM. So this resistor drop will be I naught into R, and this VL0 plus is nothing but the minus of VL, right? This is the minus of VL, which is minus of I naught into R. So ये basically इसका VL0 plus का वोल्टेज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो VL of t होगा, that is minus I naught into R and e raised to power minus of t by tau. That's why it is a negative function, as you can see. यहाँ पर VL0 minus तो always 0 वोल्ट है, तो जिसका इंडक्टर का जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज द माइनस I naught into R. इसको सिंपली राइट माइनस VL0 प्लस लिख देते हैं इसको, और यहाँ पर ये तो ऑलवेज 0 वोल्ट है, राइट? दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू and this is the discontinuity. This is the discontinuous waveform, और उसके बाद फिर it will be terminating to 0 volt like this, right? तो यहाँ पर will be having a 0 value wave infinite, and यहाँ पर also 0 minus is also 0. So this is the real of t, which is a negative function, as we can see, right? So ये basically waveform होगा इस तरह से. So ये basically reason. So I hope it is clear, or you have any queries, you can definitely ask in the comment section. So okay, thank you.